Yes, please. Good. It's start. Yeah, it's recording. You can start. Assalamu alaikum, everybody. Auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. So today we have a new topic. हमने conflict, building relationships and resolving conflicts पे पूरी series चलाई. And the whole idea was that life आपके ख्याल में क्या है? Is it about relationships? Is it about relationships, life? What else is it about? Relationships की कितनी अहमियत है? What do you think? इस्लाम में क्या अहमियत है? काफी ज्यादा है ना? Yeah, very Right? much. Is Very it much. not just relationships? Mostly it's relationships. Of course, we have to take care of this planet. हमें resources दिए गए हैं, उसमें भी हमें ethical होना है. But mainly it is about relationships. So that's why we took that up as a first topic. What is it? How do we bring up understanding? And we looked at beliefs, jo know yourself ka, know yourself part 1, part 2 is looking at control and beliefs. कैसे हम अपने ऊपर emotions के ऊपर, अपने mind के ऊपर, अपनी body के ऊपर, अपने कल्ब के ऊपर, how do we control that so that we as the individual, as the soul, we are in control. So हमें अल्लाह ताला के पास प्योर जाना है वापस. Yes, that's our entire purpose of being here. हम आए प्योर थे, हम हो गए हैं impure. And when the mind accepts the impure to be impure, तो we become pure. तो इसलिए सेल्फ रिफ्लेक्शन को बहुत एम्फसाइज किया है नो योरसेल्फ पार्ट 2 में कि कैसे हम अपने बिलीफ सिस्टम्स को देखें, जहाँ पे हम अपसेट होते हैं, जहाँ पे हम गलत सोचते हैं, जहाँ पे हम उदास हो जाते हैं या जेलस हो जाते हैं. सो दैट काइंड ऑफ whole procedure was discussed in that and in building relationships. And if you still feel कि इस पे और काम होना चाहिए, तो maybe after this this series we will put in exercises. What do you think? करना चाहिए कि एक belief को कैसे how do we shift it from ourselves and make it align with Islam? करना चाहिए इसको? Okay, sisters are saying yes. If I think इसकी exercises हम properly course में ले आएंगे. अभी हम Zoom sessions पे करते रहे हैं ज़्यादा, तो we'll bring it up into the course as well. Inshallah. So self-reflection will change your life. उसके बगैर नहीं हो सकता. अल्लाह ताला कितनी दफ़ा कुरान पाक में बोल रहे हैं गौर करो. इसी पे कह रहे हैं गौर करो, अपने ऊपर गौर करो. And we say that your words start to lose value when your actions don't match. तो ये हर रिलेशनशिप में है, चाहे हमारे स्पाउस के साथ है या फ्रेंड्स के साथ है या बच्चों के साथ है. हमें खुद एग्जाम्पल बनना है. There is nothing bigger in bringing about change in our children, in our home, in our spouse, अगर हम वो एग्जाम्पलीफाई नहीं कर रहे. और वो एग्जाम्पलीफाई कैसे करेंगे? अपने बिलीफ सिस्टम्स पे चेक रखें, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें. And this is why the homework is set for change your belief systems. So we went over this thing: what is a belief, a conviction, or opinion held by a person who thinks that their beliefs need no changing. यहाँ पे कोई है जो कहेगा कि मेरे बिलीफ सारे सही हैं? Would we be able to say that? Yes, no? No, we all need, some Yeah, improvement. I think it's just part of life. We've been impacted. तो हम कह रहे हैं कि अगर एक हम में से कोई parent है, वो कहता है I'm not a good parent, I'm not a good mother. This is the belief they've got in themselves, right? So it says the amount of belief you have determines the amount of potential you can tap into. तो आपने बोल दिया अपने खुद को कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ या अच्छा बाप नहीं हूँ,
तो आपकी पोटेंशियल उसी वक्त कम हो गई. यू कांट टैप इनटू द एनर्जी, इनटू all the determination to be a good parent. You stopped it right there. तो आपकी एक्शन भी लिमिटेड हो जाएगी, आपकी रिजल्ट भी लिमिटेड हो जाएगी, right? And then of course because the results won't be good, तो आपको reaffirm करेगा कि हाँ मैं तो अच्छी माँ नहीं हूँ या मैं तो अच्छा अब्बू नहीं हूँ, right? So now let's look at another one. Success is defined by my children's good grades. ये हम लोग काफी पेरेंट्स हम लोग ऐसे सोचते हैं कि success of the child or my own is defined by the children's good grades. तो इसमें potential को क्या होएगा? आपका potential बढ़ेगा किस तरफ बढ़ेगा? grades की तरफ. You हाँ, want to. you will have all the energy, determination to actually get good grades for your children. और आपके सारे actions उस तरफ होंगे. You know, you will get tuition for your children, you'll get the right books for them, you'll get the online programs for them, and you'll keep them all focused on, let's get you good grades. Results भी आपके good grades के आएंगे, फिर वही चीजें आप all reinforce करेंगे जो good grades लाए. So one has to really look at कि ये बिलीफ सिस्टम सही भी है कि नहीं है जो हमने उठाया हुआ है. वी आर गोइंग टू यूज द टर्म माइंडसेट क्योंकि वो जो सारी चीजें पोटेंशियल एक्शन रिजल्ट्स बिलीफ ये सारे मिलके एक माइंडसेट बना देते हैं, राइट? A set of beliefs or a way of thinking that determines one behavior, outlook and mental attitude. तो हम इसको माइंडसेट कह रहे हैं अभी. So belief कि उसकी जड़ पे बिलीफ है. And then you have this mindset. So what do you think is holding us back from being true Muslims? क्या चीज है? What holds us back from being true Muslims? You probably not even understood or even reflected on what what it means. हाँ, to so be it could be, Muslim, yes, we don't know what that means. हमारे पास, supposing हमारे पास है knowledge, basic knowledge है. In spite of wanting to feel, behave and respond like a Muslim, we deviate. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि काफी हम लोग इस ग्रुप में आ गए हैं, तो वी डू नो व्हाट इज राइट. अल्लाह की मेहरबानी है ये भी कि हम पहचान लेते हैं ये सही नहीं है जो है. तो ये डेविएशन क्यों हो रही है? हमारे नॉलेज हमारे पास है भी, फिर भी हम डेविएट कर रहे हैं, राइट? सो अगेन वी हैव टू लुक एट दैट. उसकी जड़ क्या हमने बोली कि बिलीफ है. अब उस जड़ को जब नहीं हम काटते तो हम अपने ऊपर इन्फोर्स करते हैं कि चलो ऐसे नहीं सोचना चाहिए, मैं ऐसे नहीं सोचूंगी या ये नहीं करूंगी. लेकिन उसकी जड़ से उसको निकालना है आपने. अदरवाइज you end up with a lot of rules and impositions on yourself which are very hard to keep. You break it after a while, tension build hota hai, right? So I'm going to show you a few beliefs. आप मुझे बताएं ये सही हैं? ये सही beliefs हैं. People aren't trustworthy. Number 1 पे. No. Is it right? What do you say? कोई कह रहा है कि ये सही है, people aren't trustworthy. ये मेरा belief हो सकता है ना, मेरा belief, right? Some people think like that. The world is a dangerous place. ये सही belief है, ऐसा रखना belief. No. What do you think, Sister Shazia? क्या ख्याल है? The Back में world type is कर. a dangerous place. जी, इसमें मैं ये कहूंगी कि कम्प्लीटली हमें ऐसे नहीं, ऐसे बिलीफ हाँ, नहीं रखना चाहिए कि right? कम्प्लीटली अनट्रस्टवर्दी है वर्ल्ड. देन यू कैन हाँ, नॉट लाइक you कोई भी can't आप काम नहीं कर generalize. सकेंगे. हाँ, हाँ, you can't generalize, and the world is a dangerous place. We believe is not really right, is it? It's not the one to have. People older than me are always right. I'm not creative. I'm not good at maths. I need a degree in XYZ to be successful at XYZ. It is better to avoid conflict than challenge a thought you don't agree with. I need to have money in order to be happy. My value as a person is determined by how much I accomplish.
So आपके ख्याल में से कौन सा इस्लामिक बिलीफ है इसमें से? कोई है? And नहीं, सिस्टर राना से कोई नहीं है. none of them. Mhm. Maybe the last one depends on what you're, accomplishing. If you're हाँ, accomplishing the accomplish beliefs. भी हम कह रहे हैं ना, हाँ. sister Rana, we go into this that it's the result is not the point, is it? The niyat and the Right. effort is the point, True. सही बात. right? So yeah, you're right. It's not, none of them are really like that. So beliefs को अगर हम देखते हैं कि एक छोटा baby is born, he's so pure. So he's not born with limiting beliefs, right? You aren't born with limiting beliefs. You're born pure. You pick them up along the way in life, most often at an early age and without any idea the trouble you're causing for yourself. तो बड़ा unconscious effort है. It just gets in there. You see something, you make a belief on it. As a child, you're more prone to that because you're living in a very uncertain area. You're trying to learn. तो belief डाल देते हैं आप इधर उधर से. वैसे भी बड़े भी होके education system, culture, everything is working on creating these limiting beliefs. तो कोई लिमिटिंग बिलीफ का कोई आइडिया बताएं, कौन सा लिमिटिंग बिलीफ है, कौन सा नहीं है? लिखें कोई चैट में. व्हाट इज और टेल अस व्हाट इज अ लिमिटिंग बिलीफ एंड व्हाट इज नॉट अ लिमिटिंग बिलीफ. एनी आइडिया? ये लिमिटिंग बिलीफ थे जो यहाँ पे दिखाए. Yeah. ये अनलिमिटिंग. अच्छा, कोई फिर अनलिमिटिंग बनाए, दैट आर नॉट लिमिटिंग. Yeah, okay. Yeah. So my spirituality can grow is not a limiting belief. My closeness to Allah Ta'ala will keep on increasing is not a limiting belief, right? I will, get my family towards the goal of getting connected with Allah Ta'ala spiritually is not a limiting belief, right? So are we saying our beliefs are Islamic when they are in reality not? ये हमें check करना है. Because a lot of there's a lot of superficialness we see in society. तो उसका what we have to do is to really examine के असल में नीचे क्या belief है. Why are parents' beliefs key? वो क्यों important हैं parents के beliefs? Why do you think they're important? Parents के beliefs. Why would are they important? Not important. We tend to lecture our children, we need to talk to them, but हमारे अपने beliefs जो हमने यहाँ पे देखा कि it's our action actually that they are watching. It's not our little talk that we give them. So हमारे beliefs or actions connected हैं, and if those beliefs are there, sometimes and quite often वो उसी से they impinge on them. If they see you and you're actually demonstrating them, it just has more conviction for them than your words. Do you agree? So the whole idea is that we do need to clean up our beliefs. It's a gradual and everyday process. So कहाँ से beliefs आ रहे हैं? They are coming from our personal experience, from our emotions हो जाते हैं, कभी हम कुछ believe कर लेते हैं, authorities हैं हम उनको believe कर लेते हैं, बहुत चीजें repeat हो रही हैं, whether in media or in education or by our parents or relatives या religious people, तो वो भी हम उठा लेते हैं, क्योंकि वो इतनी दफा repeat होती हैं. We can accept them, our children can accept them because there's too much repetition. And of course, culturally जो चीजें हो रही हैं या अपने family में हो रही हैं, उससे भी beliefs बन जाते हैं. So it's very necessary to actually check the beliefs. तो हम कह रहे हैं कोई belief है, फिर हम हमारे
it's up to us to get that knowledge of Al-Quran and Sirah to actually see कि ये belief जो है ये सही भी है या नहीं है, and then you come to the truth, right? So does that make sense कि ये process बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि हम बैठ गए belief अपना change करने, but the knowledge of what it should be is more important so that you bring about the right change in yourself. जी Sister Shazia? Did you want? मैम इसमें ये भी होता है ना, समटाइम्स चीजें इतना हमारे आसपास सामने होती आ रही होती हैं, काफी टाइम से होता चला आ रहा होता है, और वो हमें लगता ही नहीं है, हम उस पर सोचते भी नहीं है कि ये ठीक है ये गलत है, हम कहते हैं ऐसे हो रहा है तो बस ठीक है, वो हमारा पक्का पक्का बिलीफ सिस्टम बन जाता है। उसको तो हम आउट ऑफ क्वेश्चन रखते हैं ना कि इस पे तो बात ही नहीं करनी, जिसको शायद हम कल्चर में ले सकते हैं, या क्या कहना चाहिए कल्चर, पर्सनल एक्सपीरियंस, इट जस्ट बिकम्स रेपिटेशन इतनी हो रही है कि आप उसको क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो, यू जस्ट एक्सेप्टिंग इट। सो इसमें से पहला जो आपका हम होमवर्क है कि इसके ये चीज़ों को अगर हम देख रहे हैं 9 को, तो इस पे इस्लामिक बिलीफ लिखें हर एक पे। इज दैट पॉसिबल? इज दैट अ गुड होमवर्क? कि पीपल आर ट्रस्टवर्दी, तो इस्लामिक बिलीफ क्या होना चाहिए? Should we try that as a homework? Yeah. Do that work? Okay. All right. So now we are looking at what is your mindset? So अभी आप देखें आपको ये चीज कैसी, ये क्वेश्चन कैसा लगता है? Do you avoid challenges, new projects, new responsibilities? आप अपने खुद को पूछें, do you avoid these? Do you like praise and dislike feedback? Do you find that in your role as parent, friend, colleague, employee, जो भी आपके role हैं, you feel that you have to always prove yourself? When others seem to be doing well, do you feel less and inadequate and at times even threatened? सही। So ये जो चीज है ये आप खुद, for your personal self you answer it, right? So we're going to look at this kind of mindset कि ये 2 किस्म के mindset हम देख रहे हैं, एक fixed और एक growth का mindset है। तो fixed mindset में आप avoid करते हैं challenges, right? And growth mindset में आप challenges को opportunities की तरह देखते हैं, right? And then the next one is you refuse to receive criticism or feedback. तो वो आपको बुरा लगता है, ये क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, you feel they will judge you in a fixed mindset, but in a growth mindset you embrace constructive feedback. अगर यहाँ बताओ मुझे बताओ इसमें क्या चीजें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, हमें फीडबैक दो इसका। So when you have a fixed mindset, you focus on proving yourself. You don't feel confident. You want, for the external people to acknowledge whatever you are, to feel good about yourself. And you, in the growth mindset, you're focusing on the process, not on the result, right? So in your journey to raise children or make your home, you are confident कि आज के दिन मैंने पूरा अच्छी तरह से try किया, and I kept my character in, and I did set a good example as a mother, as a wife. So and you're happy with that process. अब किसी में change आया, शोहर में या बच्चों में आया, that's not the point. But you're happy with the process in itself that you've done that, वो आपका growth mindset होगा. And you feel threatened by other success. आप दूसरों को देखते हैं, अपने को कम सोचते हैं threatened feel कर सकते हैं, जब मैं नहीं ऐसी, तो that's a fixed mindset. And you be inspired by other success. कैसे इन्होंने किया, इनसे पूछते हैं, maybe I can learn something. So that would be a growth mindset. तो आपके ख्याल में कौन सा mindset right है और क्यों? What would you say? कौन सा mindset right है? Yeah. The growth one for sure. Yeah, growth one. Why do you think that is right?
because यहाँ पे आप improve कर रहे हैं, you can, you know, your opportunity to improve yourself Yeah. multiple levels. Yeah, and life is about improvement. टेस्ट ही लाइफ का है कि हम इम्प्रूव करें, राइट? और फिक्स्ड माइंडसेट से आप अपने पोटेंशियल को लिमिटेड कर देते हैं. यू डोंट यूज योर अपॉर्चुनिटी लाइक एबिलिटीज to see how much potential Allah has given you. Absolutely. तो ये किसके लिए सही है माइंडसेट? आपके लिए, बच्चों के लिए, किसके लिए कौन सा माइंडसेट सही है? बोथ के लिए होना चाहिए. For everyone, this mindset is the one that you should be looking at. So we're going to look a little bit more at this because we are dealing. We want to make sure कि हम में भी growth mindset हो, और जो हम कर रहे हैं घर में या with our friends, with our family, तो हम फिक्स माइंडसेट को तो नहीं ला रहे किसी में, क्योंकि हमारे बोलने से भी फिक्स माइंडसेट आते हैं लोगों में, right? So we are going to look at firstly beliefs. So people with fixed mindset, believe that skills, intelligence, and talents are natural. और जो growth mindset है वो कहता है you have the capacity to learn and grow your skills. So if we are going to say to a child कि बस तुम तो बेवकूफ हो, तुम नहीं अपने भाई की तरह इंटेलिजेंट, हमने उसको किस तरफ कर दिया? फिक्स माइंडसेट में डाला, राइट? एंड समटाइम्स वी से ऑल्सो कि आप में ये टैलेंट नहीं है, आपकी बहन में ये टैलेंट, आप ये नहीं करो. So that again limits, you're limiting that child's ability, क्योंकि you can grow your skills. Growth mindset रख, आप अपने mind में रखें, it's a growth mindset, they can do it. Failure is shameful and should be avoided. Failure, growth mindset में, is a valuable lesson. So जब बच्चा फेल होता है तो हम कैसे react करते हैं? Sometimes we say the most harmful things to our children. या फिर से वही ग्रेड लेके आ गए, कुछ तो इम्प्रूवमेंट ले आते. So it's very necessary कि we are not only in ourselves, हम failure को एक valuable चीज है. आपको कोई चीज लगा है कि आपकी लाइफ में failure हुई है and you are so grateful that you failed at it. There are things that have happened and you think, my God, at that time आपको बहुत बुरा लगा, but it was a blessing in disguise. So very necessary to look at failure के इससे हम क्या सीख सकते हैं? We always say that to a child, oh, you failed, an opportunity to learn. Let's see what we can learn from this, right? And उसको shameful and avoid saying any negative things on it, क्योंकि उसको भी फिर वो failure को वैसे ही लेंगे. अगर आपका negative emotion आएगा तो the child will also look at it like that. And we don't want that happening. Life में failures आएंगे, अल्लाह ताला ने कहा है, it's a test. You're going to fail, you're going to do well. It's just part of life. We just learn from everything is a blessing. So fixed mindset सोचेगा, some people are naturally good at things while others are not. People who are good at something are good because they build that ability. Growth mindset ये सोचेगा. तो अगर आप में कोई चीज कमी है और कि आपके सिस्टम में ज्यादा है या नेबर में ज्यादा है, all you have to do is to work hard at it and you can get better. But you have to bring that in yourself ताकि आपका बच्चा भी वो देखे. You can't just tell them but not actually practice it yourself. You're not in control of your abilities is the fixed mindset. You are in control of your abilities is the growth mindset. Right? So अब effort को कैसे देखता है एक fixed mindset और growth mindset? So effort is a big thing for a fixed mindset. They're not necessarily useful. See effort as a negative thing and something you do when you are not that good. Right? So this thing needs to be handled if a child is feeling that.
हम भी कभी ये सोचते हैं ऐसा तो इतनी एफर्ट है, बस में टैलेंट नहीं कर सकते. But effort is needed. All of us are putting an effort into learning Arabic. It's not something that we feel ke, oh, I'm not good at it, so I don't want to do it. जहाँ पे हमें करना होता है हम कर देते हैं. So the effort is to be valued. आप जहाँ पे भी effort डालते हैं उसको tell yourself it's a good thing I'm putting an effort in it, because in the growth mindset it's an important part of the process, focused on the process of getting better and consider different opportunities. So effort to डालनी पड़ेगी. Life is about effort, isn't it? Life is about it, right? फिर हम देख रहे हैं challenges का क्या है, fixed mindset कैसे देखता है और growth mindset कैसे देखता है. तो fixed mindset avoid करता है challenges को और उनको देखता है as a threat कि अभी मैं expose हो जाऊंगा या कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता. They shy away from tasks that are difficult or unfamiliar, fearing failure कि what will people say or something. And growth mindset will embrace it, more likely to embrace challenges and persevere moving forward. Mistakes को कैसे देखेगा एक fixed mindset? They will avoid it, discourage when making mistakes and avoid them. Whereas a growth mindset will improve, look at the mistakes and learn from them and use them as opportunities and ways to get better as a person. So defensive होंगे on feedback जब मिलेगा a fixed person. He doesn't really want to know. He can't handle anything negative, ignores useful criticism and feedback, feels very defensive personally. Whereas a person with a growth mindset will appreciate feedback and use it and learn from the criticism. So does that make sense that we are, from an Islamic viewpoint, we need to ensure that our viewpoints on beliefs, effort, challenges, mistakes, and feedback are of a growth mindset. And we need to exemplify that. हमारी daily life में हम उसको exemplify करें. And then our children, भी क्योंकि स्कूल में या दोस्त या कुछ इधर उधर कोई बात हो जाती है, we can also pick up कि कौन सा mindset इनका आ रहा है. And we can correct it when we see them making some beliefs about themselves, which are of the fixed kind, because it's basically they get held back because of that mindset, which they develop because somebody said something or evaluated from them, a teacher said something like that, right? So यहाँ पे एक मैंने link डाला है, and we can put it on the site as well. There are lots of quizzes where you can go and check yourself, but this one's quite good, and we can share it in the in the WhatsApp group कि आप जाके खुद ये कर लें, देख लें आपका कौन सा mindset है, whether you have a growth mindset or a fixed mindset. Is that okay? Yeah. Okay. So बच्चे की तरफ अगर देखें हम fixed mindset तो watch what they say. Watch what they say. Listen to it. So if they are saying, I'm not good at this, so what would a growth mindset do? They would say, I can't do this yet, but I will be able to do it, right? So when they are saying these things, आप भी देखें कि आपने उसको किस तरह से turn करना है so that they don't sit in the fixed mindset. So I give up, I try another way of doing it. Growth mindset होगा तो ये करेंगे और fixed होगा तो कहेंगे I give up. So it's good enough. They will settle for whatever is there in the fixed mindset, whereas in the other one, this is my first try, I can do better. I made a mistake. I'm enjoying my learning challenge. तो उस पे रोते धोते नहीं है कि गलत हो गया, but they look at it, oh, I'm enjoying my learning challenge, ये गलत हो गया, चलो अब इसको कैसे सही करूँ, right? I'm really good at this. I'm really good at this, or growth mindset, I can find out how they got so good.
So they settle for a very low standard if you are in a fixed mindset, whereas in a growth mindset, you're improving. I will never be as good as them. This will take me some time. So it's just a different way of looking at the same thing. I can't do this. I can make this even better. So opposite mindsets. I can't make it any better. I can always improve on something. My friend is stuck and उस पे settle हो जाएगा, fixed mindset, growth mindset होगा. How can I help them? Right? So little things that you can watch how your young ones are doing. Is there कोई questions हैं before we go into how what to watch out on mindsets? Anything you want to ask or happy with this? Is it okay? So how do you actually bring about a growth mindset? How to help yourself and children retain or develop a growth mindset? तो इसमें 6 चीजें लिखी हैं जो आप कर सकते हैं घर पे. When anything is going on, even with yourself, तो आप प्रोसेस की बात करें, रिजल्ट की बात नहीं करें. Right? You talk about effort, strategies, progress, hard work. Oh, you did such a lot of hard work to get here. Very good. Persistence की बात की कि आप persist किए, इतनी सारी मुश्किलात आई, फिर भी आप करते रहे. You rose to the challenge. वो कह सकते हैं learning from a mistake. So you're always talking about the process, not about the result. And do not discuss talent, being smart, born gifted, fixed abilities, and not making mistakes. ये चीजों पे नहीं focus करें, right? Is that clear? Yeah, it's okay. Number 1 is you're happy with that, you can apply that. And number 2 is encourage continuing. तो मुश्किल लग रहा है, आपको भी मुश्किल लग रहा है, आपके बच्चे को भी मुश्किल लग रहा है, maybe your spouse is doing something, finding it very hard. So use the word yet. He can't do it yet, but you will be able to do it soon. Yeah, you don't fully know it yet. थोड़ा सा उनको आता है, वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, ये क्या है, बहुत है, मुश्किल है, तो you don't know it yet. Let's just try. Maybe कोई word है आपको समझ नहीं आया, let's look it up in the dictionary, let's see what we can do. Learn and practice and you'll do it and know it, right? So you keep that encourage on continuing. You can't do it yet, but you will be able to do it. Mistakes पे, sometimes it's in some places we find दूसरे बच्चे हंसते हैं या घर में भी लोग हंसना शुरू हो जाते हैं कोई mistake होता है, तो value करें mistakes को. Mistakes help you improve. Make them, very proud of trying to do something. आपने try किया, okay, you made a mistake, let's learn from this mistake. I bet somebody else didn't make this mistake, so they won't be able to learn from it, and you will be able to learn from it. Can you think of another way of doing it? So parent की recognition of own mindset बहुत ज़रूरी है कि people around us also get a growth mindset. Mindful of own thinking, messages you send out with your own words and actions. Sometimes we are in the growth mindset, लेकिन हम बच्चे के लिए इतना protective हो जाते हैं कि हम बोल देते हैं कि यानी ये नहीं करो, वो नहीं करो. We are so protective of them. So अपने words को watch करें, that if they are encouraging a fixed mindset or a growth mindset. Ask them, what did you do today that made you think hard? You want to develop their critical thinking. You want them to be able to think for themselves. So that even, exercising the brain and getting things, it's like a muscle, isn't it? The brain, if you don't use it, it gets good at analyzing things. But if you're not using it and just copying and writing answers, you're not really growing in its use. So ask the children, आपने क्या, कौन सी thinking hard की आज? What new strategies did you try? What mistakes did you make that taught you something? What did you do today that was hard? Or action maybe. So that was mentally, but action maybe, what did you do that was hard? And you can always, with the little grown-up kids को आप खुद भी journaling रख सकते हैं
so that you can write your emotions and everything, how you felt like it and how you learned from it, writing towards growth mindset ki cheezon pe. And of course, you can always choose the stories, movies, books on process rather than on results. So that would also encourage the growth mindset. Does that make sense? Yeah? Is it helpful? I hope it's helpful, inshallah. So we are looking at, ये चीज हमने शुरू की homework पे, observe without judgment. And we are looking at, इस पे आप बताएं, we are looking at the child. उसमें भी, उसको भी body है, उसको भी qalb है. They have a mind, they have a body, and they have a soul. So, and they have an individual journey, and we have an individual journey. और उनकी फितरा भी वही है जो हमारी अल्लाह ताला ने सबको फितरा में बहुत potential दिया है. So it's very important कि उनको किस तौर पे देखा जाए. Sometimes we are looking at them like they are our ownership. We own them, whereas they belong to Allah Ta'ala. We are just we are here as a custodian of them. We are looking after them. So, our job is to raise them towards that fitra that Allah Ta'ala has blessed them with and keep them pure and acquaint them with Allah Ta'ala. That's the main thing. They have that strong bonding with Allah Ta'ala. So we need to be looking not through the vision of stories, projections, judgments, emotions, past trauma, trying to protect them, our beliefs, but through the lens of Islam. If we look at them, we look at them like that. And aap logon ne jo, the monks that gave some observations, they are looking through the lens of Islam. And that's what, we try and look at through our children, but without judgment. Jo abhi hai, wo dekhen. Jo hai, usko accept kare. Abhi aise hain. So this is our homework number 1. We continue with this one of observe without judgment. And then we go on to steps A to E. When the mind accepts the impure to be impure, तो reflection करें, अपने belief systems को steps A to E तक ले जाएं. Mostly आपके अपने belief systems को daily कुछ, as individuals, we should be improving them. Anybody can give an example कि कोई belief system handle किया इस हफ्ते में? Is there anything that you could share? That you actually brought about a change in belief system? No? Nobody changed any belief system? कोई change किया कि नहीं किया? अस्सलाम वालेकुम. मैं थोड़ा इस पे वर्क कर रही हूँ कि जैसे मेरे बिलीफ सिस्टम होता है ना कि जो बच्चे जो भी कर रहे हैं फौरन उनको करेक्ट करना. तो नाउ आई ट्राई टू स्टॉप माई सेल्फ कि मतलब फौरन उसको करेक्ट नहीं करना. लेट हिम डू एंड देन मे बी लेटर ऑन मैं उसको समझाऊं कि ये बात यहाँ पे गलत थी. जैसे पहले मैं राइट अवे फौरन कह देती थी कि ये गलत किया आपने. तो इस पे थोड़ा सा मैं वर्क कर रही हूँ. जैसे हमारी बिलीफ सिस्टम होता है ना कि ये रॉन्ग को मतलब बच्चों को सही करो, जब वो गलत करते हैं आदत पक्की हो जाएगी या जो भी, लेकिन किस तरीके से करना है उसको थोड़ा उस पे मैं वर्क कर रही हूँ. That's very good. You're even asking them a question. What do you think? Is that right or is it wrong? What would happen if everyone started doing that? Something like that. So they draw the conclusion. तो बेसिकली उनकी थिंकिंग प्रोसेस में वो बैठ जाए कि भाई ये सही है या गलत है. तो आई थिंक द मेन थिंग इज कि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ा दें हम, कि वो खुद जज करें और खुद अपना डिसीजन करें कि भाई ये सही है या गलत है, वो क्यों सही है क्यों गलत है. Would that work? Yeah? Okay. All right. So इस पे any difficulties हैं belief system को change करने में, please voice करें. So then I put it on higher priority, क्योंकि ये हमारी basic foundation है.
I might look at, doing doing a session just on handling belief system, अगर आपको तक उसमें difficulty हो रही है. But you need to tell me that. I think one difficulty, I think, as a parent, which I, face is, where is the difference between the belief system and the responsibility of a parent? Where should I be, kind of putting the, rules, especially for younger ones, who are less than 12 years old. So, wahan pe, for example, restricting the TV time or screen time. So, where should I reinforce and what is that line? Wo wala, that is a little bit of a clarity nahi hai, I would say. Yeah, I think it starts early though, doesn't it, Savannah? अगर हमने शुरू में ही वो थिंकिंग ले आए हैं कि बच्चे को भी समझ आ रही है कि भाई ये क्यों रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, it shouldn't be like it's the willingness, which we'll also cover in this prerequisites to changing beliefs, one of the things we are covering, कि किस तरह से चेंज लाया जाए, क्योंकि कोई भी enforcement doesn't really work. Even on a little one, you have to bring their willingness onto it. So, inshallah, we'll cover that more on it, on that area. Because, the only parenting style and only teaching style that we have gone through ourselves as kids is kind of an enforcement one, right? Yeah. So the confusion of the mind is, is that the better one? Is, so that Doesn't work. Clarity, wo surety, or agar nahi hai, to then the alternative, we have not seen an example or anyone do it in front of us. So we are not confident enough or sure enough or even how to do it. So wahan pe struggle aati hai. I think there's a lot of, at an earlier age, you need to ask them questions and they start thinking with it, कि ऐसे होगा तो कैसे क्या करेंगे, अगर एक बंदा सारा वक्त टीवी देखता रहेगा तो क्या होगा उसका, बताओ. सारा वक्त कंप्यूटर गेम खेलता रहता है, अब वो बताओ बड़ा हो रहा है, क्या होएगा उसको, क्या उसकी लाइफ क्या होएगी, उसके अम्मी अबू भी मर गए, अब क्या करेगा. It's like they need to actually see the need and the balance in life, and how do you bring about that thinking in them. And I think it's just getting to chatting time needs to increase in our homes and talking about questions and आप बताओ फिर क्या होएगा, कहेंगे बहुत मजा आएगा. They start off with like that, and that's okay. And I said okay, फिर पैसे खत्म हो गए, अब क्या करेंगे, वो जो हम ये छोड़ के गए थे वो खत्म हो गया, अब क्या करेंगे, और वो कोई ग्रोसरी लाने के लिए भी नहीं, गाड़ी भी नहीं है, अब क्या करोगे. So it's like if they start sort of getting them to think with the area, inshallah, I think that would make a difference. And we'll keep covering these things. I think as we go through the sessions, inshallah, we'll get more confident on how to handle it. So ye homework number 2 hai. I don't see much feedback on it any week कि भाई हमने ये belief change किया. I don't see it, and that's why I ask कि भाई इस पे कुछ करना चाहिए तो आपको मदद होगी या आप actually steps A to E कर रहे हो. So I would survey में मुझे बता दें, survey भी last time कम लोगों ने किया था, इस week please सिस्टर शाजिया फिर से डालेंगे कि ये सिस्टर यास्मीन, can we put it on that please बताएं so that we know कि इसको करना चाहिए. How many people say we should be going through steps A to E in another Zoom session? या आपको कोई एक्सरसाइज दे दूं जिसमें कहूं ये बिलीफ है, इस पे लगा के आओ, इस पे लगा के आओ, A to E ऐसे भी कर सकते हैं. Should we do that? Yeah, I think exercise will be good. Exercise is good. Even random or किसी और के भी any belief, then Okay. And then our homework number 3 is this one. इस पे ये एप्लीकेशन करनी है, right? Is that possible? इस पे कोई questions हैं? We are going for a growth mindset. पहली prerequisite of changing belief system is कि आप में growth mindset हो and you are promoting growth mindset in your family and children, right?
Is this doable? मुश्किल है? सिस्टर शाजिया, मुश्किल है ये होमवर्क नंबर 3? सिस्टर समीना, what do you think? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी। मैं देख रही हूँ ना, असल में जब आप बता रहे होते हैं ना सारा कुछ, तो समझ भी आ रही होती है। जब खुद भी आती है ना करने के लिए तो फिर मुश्किल लगता है उस वक्त ना, वो समझ नहीं आ रही होती ना आपको, मतलब उस वक्त थोड़ा हाँ प्रैक्टिकल में थोड़ा मुश्किल लगता है, समझ नहीं आती ना फिर कौन सा हाँ चीज डालूं मैं कि ये बिलीफ सिस्टम है या नहीं है, ये कंफ्यूजन बन जाती है। ओके। जी जी ऑलराइट, सो होमवर्क नंबर 3 में आप कंसंट्रेट करेंगे कि आप रिजल्ट पे नहीं फोकस करेंगे, आप प्रोसेस पे करेंगे। So सही if है। your son or your daughter is doing some work, तो आप उसके प्रोसेस पे बात करेंगे, वाह आपने इतनी अच्छी तरीके से ये किया, and you could, maybe they are making a project or something or growing a plant के, what इस पे तो बड़ी मेहनत करनी पड़ी आपको, and where did you get the seed इनकरेज from, करना है, what बातचीत study did करनी you है। do, right? सही, मतलब Yes. इनकरेज करना है बच्चे को, उनके साथ डिस्कशन करनी है उस चीज के ऊपर, और उसको हाँ, बताना है आप कि जो आप भी कितना बात अच्छा करें। करें उसके रिजल्ट पे बात नहीं क्या करें, रिजल्ट नहीं करना, सही है। और हम रिजल्ट पे स्ट्रेट नहीं वे करें, रिजल्ट पे क्योंकि चले वो जाते हैं। सारी जिंदगी रिजल्ट के पीछे हम भागते हैं, वो ये सही है, हम ऐसे ही और करते हैं स्ट्रेट प्रोसेस वे। इतनी टेस्ट गंदी हुआ है, तरीके कैसा से हुआ है, रिजल्ट करते क्या हैं, निकला। इतना अपसेट होके करते हैं, इतना स्ट्रेस सही। होके करते हैं, हम्म। इट्स नॉट, अल्लाह ताला के सामने वो कबूल नहीं है वो तरीका। अल्लाह वही जैसे ताला कि आप कह रहे रिजल्ट थे ना, लाते हैं, अल्लाह जैसे ताला कि आप रिजल्ट देते हैं, हमें सही, खाली उसका प्रोसेस इन ट्रू सेल्फ में करना है, ट्रू सेल्फ में, बस, जैसे अभी बता कामली। रहे थे ना कि हर बंदा डिफरेंट होता है। सॉरी, हर बच्चे की एबिलिटी डिफरेंट है, कोई जल्दी क्विक लर्नर है, किसी को टाइम हाँ, लगता है। फाइन फाइन, वो सब एक्सेप्ट करें, किसी चीज पे हम्म। नहीं, क्रिटिसिज्म उस पे नहीं हो। It's like सही है। accept them for who they are and encourage them. Number 2 point है, encourage करें, अच्छा वो कहे मुझसे नहीं आता, ये मुझसे नहीं होता, बच्चा रोना शुरू कर देता है, ओ इसे अभी अभी यहाँ अभी नहीं आता आपको, लेकिन इतना तो आता है, ये तो पहले भी नहीं आता था आपको, यहाँ तक तो आ गया, so you get them to keep on, it's just use the word कि आप तो अभी मैं नहीं हुआ है, इंशाल्लाह आगे होएगा if you keep trying. इंशाल्लाह। मेरी मेरी दो बड़ी हैं ना, अब एक कॉलेज में है फर्स्ट ईयर में और दूसरी सेकंड में। जो सेकंड वाली है वो ऐसे बैठे बैठाए अपना काम कर लेती है, उसको कोई मसला नहीं होता। जो अभी वन फर्स्ट में गई है, वो उसको पीसफुल मतलब जगह चाहिए, क्वाइटली उसने बैठ के करना है, और रात को बैठी करती रहेगी, सुबह फिर पता चलेगा अभी उसका कुछ ना कुछ रह गया है। तो इस चीज में मुझे उसको ये इनकरेज करना चाहिए कि मतलब कितना एफर्ट कर रही हो तुम, और मतलब जो उसका रह जाता है उसके ऊपर मुझे फिर नहीं डिस्कशन करनी चाहिए कि हाँ रह गया तुम्हारा, इतना बैठ के किया, हाँ, तो कैसे करूं मैं इसको हैंडल, फिर ना इतना उसका बड़ा। सारा कर लिया, वो भी आप कोई स्ट्रेटेजी निकालोगे, उसको भी सॉर्ट आउट कर लोगे, हम्म यू कीपिंग इम्प्रूविंग इम्प्रूविंग, यही कोशिश है, यही हमारी जस्ट है, वी कीप ऑन इम्प्रूविंग। हम्म तो उसको इनकरेज करें, उसके मिस्टेक्स हो गई, कुछ रह गया, अच्छा इससे क्या सीख सकते हैं, कि कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कि ये ना रहे, मे बी वी कैन स्टार्ट अ लिटिल बिट अर्ली इन द नाइट, हम्म। मे बी वी कैन प्लान इट अ लिटिल डिफरेंटली, सही, खाने से पहले कुछ कर लें, खाने के बाद कुछ कर लें, बात किस कर ली, सही है। हाँ, तो उसको वो another way of doing it, और फिर आप खुद, आप अपनी खुद को देखें कि आप जो भी वर्ड्स जो आप अभी बोल रही थी ना, बोल वो रही आप हूँ जी। पॉजिटिव हो, ग्रोथ माइंडसेट की तरफ हो, कि से कि कौन सी चीज आपने, किस किस चीज पे आपने बहुत मेहनत की, दैट दैट इज अ गुड थिंग, मेहनत मेहनत को वैलिडेट करें, डू दैट, सो इट्स ओके, आई थिंक इस चीज पे ले आए कि ग्रोथ माइंडसेट हो, अपने को ग्रोथ वो माइंड लिमिटेड ना समझे कि मैं ऐसा हूँ वो ऐसे, ये चीज ऐसे। नहीं होनी चाहिए बच्चे में, they if they want to do something they can try, they might take longer, it doesn't matter, किसी के साथ कंपटीशन नहीं है,
Some people will do very fast something and when some people will take longer. It's okay. उसका ये मतलब नहीं है आपको नहीं करना चाहिए. सही है आपकी इंशाल्लाह. किसी के साथ कंपटीशन नहीं है. कंपटीशन नहीं है. सही है. हाँ. ये बच्चे भी ना, इनको भी थोड़ा मुझे लगता है उसको, वो भी बड़ी हार्ड है मुझे उसको भी ना समझना. मुझे हार्ड लगता है ना, मैं उसको समझाती हूँ, मैं उसको बताती हूँ ना, लेकिन उसका नहीं पता नहीं, फिर उसका बच्चे का भी अपना माइंडसेट किया होता है उन्होंने भी ना एक, वो भी चेंज करना पड़ा ना उसको भी. आई थिंक मुझे लगता है टाइम चाहिए होगा उसको भी ना, इस तरह थोड़ी मदद करके ना. हाँ, तो उनका भी बिलीफ सिस्टम आपको देखना पड़ेगा ना कि उसको किसने कह दिया कि ये बहुत जरूरी है कि आपको पास होना है या आपको ये ग्रेड लाना है. वो कहाँ से आ गया ये आइडिया कि वो तभी इतनी काबिल है, तभी सही है, तभी उसकी वैल्यू है जब उसका ग्रेड आएगा. ग्रेड तो उसकी नहीं है एबिलिटी. नहीं और है. एक सही. सिस्टम आदमी का बनाया हुआ है उसमें ग्रेडिंग हो रही है, उसका क्या ताल्लुक है उससे. उससे तो नहीं हम कह सकते कि आप बेहतर हैं या कम हैं या ज्यादा हैं. वो तो सिस्टम है, आदमी का बनाया हुआ है. सो वो चीज भी उसको हमारा सिस्टम बहुत ऐसा है ना कि वी डू स्ट्रेस अ लॉट ऑफ ग्रेड्स करते एंड एवरीथिंग, तो जी बच्चे पे बहुत प्रेशर आ जाता है. करते हैं. सही है. हाँ, तो आप उसको लोअर कर सकती हैं कि नहीं, it doesn't really matter. There are so many people who've done so many big things in life and they didn't have a grade. ऐसे तो कोई बात नहीं है. Grade is not nothing. It's nothing. आप समझो चीज को, आप अप्लाई करो, आप अल्लाह ताला को सर्व करने के लिए करो, बस. That's all that matters, doesn't it? जज़ाकल्लाह खैर आपकी एडवाइस का इंशाल्लाह. Inshallah. So, the next session we'll have is on इस session में हमने prerequisite को cover किया, fixed and growth mindset, and next session को inshallah we'll cover respect. So कोई questions हैं तो बताएं. Anything you would like to ask, please go ahead. कुछ है or should we wind up? Sister Shazia, Sister Fana, anything else we want to do? Or how did you find the session? Survey form भरा आप लोगों ने? How many people filled up the survey form? Please करेंगे? Sister Shazia, मैं repeat करूं या है survey form? सर्वे है, चैट में डाल किसी का दिया, नहीं? सिस्टर यास्मीन ने भेज दिया जी. हाँ, I can put it in again if you want. So please survey form को भरें और बताएं. Have you found it? Thank you, sister. Survey form, please भरें, and inshallah, everybody is going to do homework 1, 2, and 3. Yes, everybody agrees to do that. जी इंशाल्लाह. और रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रही हूँ मैम. Okay, thank you.